नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं अदनान आफरीदी, जो रिप्रेजेंट करते हैं NIT को। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस बजट को कैसे देखती है। अदनान आफरीदी, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। अदनान साहब, मार्केट हैज़ गिवन an standing ovation of 3,400 points to the budget, and there is one particular change in the budget in relation to the mutual fund that states that the tax rate has been increased from 15 to 25% on the income from those mutual funds whose more than 50% earning are from debt. So this is a typical change which people are trying to understand. I would want you to kindly explain this change and also comment as to how this change is going to impact an ordinary investor and the mutual fund industry. Adnan Afridi, over to you. Thank you. First of all, in terms of the market response to the budget, देखें partly तो ये एक relief rally इसलिए है कि in the days leading up to the budget there were several rumors in the media that there would be significant taxation or new taxation on the stock market, and that capital gains tax and dividend tax might be clubbed with normal income and so on. And the market was falling because of that, and it has just simply recovered the losses that it had once the clarity was received on that matter. The market is also responding to the fact that now that we have a budget which will likely be approved, that we will be closer to an IMF agreement. And I think the third reason the market has responded positively is that there were no significant adverse tax measures related to any particular one sector of the listed universe. I think the budget has been broadly neutral for all sectors, and therefore they can then continue on their fundamental with respect to the upcoming year. So that I think explains the reason why the market has responded very strongly. In terms of the mutual fund, yes, there has been a significant change in policy with respect to money market funds or income funds which derive more than half of their income through investing in fixed in government securities or bank deposits and so on. And I think the reasoning behind that is simply one of horizontal equity in terms of taxation, that why should just by putting something in a mutual fund, why should a corporate investor or an individual investor get a tax advantage when the same does not exist if you do it directly. So I think in terms of that, even the 25% rate which it has been increased to is still below a lot of high net worth individuals and corporates' eventual taxation rate. So while there will be some negative impact on these fixed income or money market funds, I don't expect the impact to be very large, also because the capital gains method, which is the alternate method through which individuals can take benefit from mutual funds, remains at 15%, which is well below the normal tax rate. It's also important to note that no change has been made with respect to equity funds where the capital gains remain at 15%. So overall, it is positive, I suppose, for institutions like NIT, which have large equity funds, and slightly negative for those AMCs which focus on fixed income funds. I think moving forward, it will also force AMCs to come out with more innovative, value-added products, so that investors come to them not just for tax arbitrage, but really for something unique that AMCs or mutual funds are able to provide them. So I think overall for the long-term development of the industry, I don't see it as a negative. However, in the short run, we may see some reallocation from fixed income to equities, which will further, I think, boost the stock market. Thank you. So I just want your expert opinion as a former finance minister and advisor to the Pakistan People's Party. How do you look at all this situation? देखिए, कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी और बिलावल साहब ने चेयर की थी। उसमें यकीनन एमएनएज ने अपनी रिजर्वेशन उन्हें बताई कि जी हमें मशावरत हमसे नहीं की गई, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इम्पोर्टेंट इश्यूज लाइक
PSDDP जो सूबों में एलोकेट किए हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने जा रहे हैं, फार्मर को हिट करेगा, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर और सीड, ये वो चीजें हैं जो ज़रूरी अजनास पे इसका कीमत में इजाफा होगा। तो हम क्योंकि आपके अलाए हैं, हमें भी इसकी हीट मिलेगी, लिहाजा हमें अपनी एक पोजीशन क्लियर करनी है। तो कल रात में कमेटी बनाई गई थी जो उनसे मिली है, फिर ये लोग शहबाज शरीफ साहब और एहसन इकबाल साहब सदर पाकिस्तान जरदारी साहब से भी मिले कल, और आज उन्होंने काफी हद तक हमारी रिजर्वेशन को एड्रेस किया है, कुछ एलोकेशन का वादा किया है। तो हम इनको सपोर्ट करेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि फाइनेंस बिल पास ना हो और हुकूमत प्रॉब्लम में आए। ऑलरेडी जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो मुल्क में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है, सरमायाकारी के लिए भी, इकोनॉमी के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, हर चीज के लिए। लिहाजा वी डोंट वांट टू ऐड टू इट। तो नेशनल मफाद में, कौमी मफाद में हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि बजट मेरिट पे डिस्कस हो, डेलिब्रेट हो, और अगर अच्छी तजावीज़ हैं वो हम बिल्कुल देंगे और बजट को पास कराएंगे। बहुत शुक्रिया। सर बेग साहब फरमाइएगा कि जो दवाओं के ऊपर टैक्स की बात है, ज़राअत के ऊपर टैक्स की बात है, और जो तनख्वाहदार तबका है उसका जो टैक्स स्लैब है, रेट्स हैं, उसको तकरीबन डबल किया जा रहा है, तो अवाम तो 90% चक्की में पिसने जा रही है। जी बिल्कुल, ये बात सही है आपकी कि अवाम और मिडिल क्लास खासतौर से पिस जाएगी, फार्मर लेट जाएगा, टूट जाएगा, ये सब बातें हैं। लेकिन IMF के साथ आप एक प्रोग्राम में जा रहे हैं और IMF की इस बार बड़ी सख्त शराइत हैं, और वो शराइत एश्योरेंसेस पे मबनी नहीं, उन्हें एक्सेप्टेबल। वो चाहते हैं कि बजट में फाइनेंस बिल की हैसियत से हम उनको अप्रूव करा के पेश करें। तो इट्स अ टफ सिचुएशन बिल्कुल, लेकिन हमारे पास IMF के बगैर जाना दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।